हाजिर हूँ मैं ज़रहूना खान और प्रोजेक्ट्स जो प्रेजेंट करने का सिलसिला जारी और सारी है। एक और टीम इस वक्त मेरे पास यहाँ पर तैयार है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। जजेस के सामने टीम मौलवी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और अपना अच्छा सा एक प्रोजेक्ट तैयार करके लोग लाए हैं, एडहॉक कम्युनिकेशन स्कैनर। क्या प्लानिंग है इनकी इस प्रोजेक्ट को लेकर, किस तरीके से इनको लगता है कि इनका आइडिया इनोवेटिव है, किस तरीके से इनको लगता है कि ये एक इन्वेंशन साबित हो सकती है, इनोवेशन साबित हो सकती है दुनिया के लिए, वो उनसे खुद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो हाउ आर यू ऑल? जरा बताइए, पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए और फिर जरा मैं बताइए कि एडहॉक कम्युनिकेशन स्कैनर क्या है। I'm Faruqi from Sakhar IBA. I'm Faisal Sar from Sakhar IBA. Abdul Qayyum from Sakhar IBA. Okay. Well, first, it's an ad hoc communication channel where we are, solving a problem of our corporations and government sector who are having, problem like costly infrastructure they are having right now. And let's take an example of my own university from where we get this problem. Like Sakhar IBA IP phone infrastructure cost almost 6.5 million rupees to Sakhar IBA. So we came up with an idea that why don't we, we use different channel through which we can communicate with each other. So we came up with an idea of ad hoc communication channel. That's it. Okay. Sir, we just want to show you our product overview. We have made a video. Pattern for, sir, there's no music. With a vision of developing a communication channel which is independent of network and other cellular mobile networks. I, with my team, and I'm Anaba Faruqi with my team member Faisal Nisar and Abdul Qayyum who have technical expertise on software development. And our team will be gladly present ad hoc communication channel. Now, have you ever realized how much cost corporate or government institutions have to bear in order to establish communication channel within organization, and how much they spend on maintenance of that structure, that infrastructure and storage space? So, and many people today, most of the peoples are depending on internet and other cellular mobile networks. So and just because of their dependency on these channels, organizations have to develop costly infrastructure which require a lot of expense in terms of having purchasing price, storage space and maintenance. So next slide. So we came up with an idea of ad hoc communication channel which is independent
internet and other cellular mobile networks. And the question is how is this is less costly and cost effective. So we are using Manet infrastructure, which is easily available in organization and which is basically a self-arranging infrastructure-less network. Next. Now let's come to workflow process. This is actually a basic workflow process which starts with the identification of mobile devices within communication range of 200 meters. Then there is another step, connection establishment, peer-to-peer connections. The first two steps are carried out by Wi-Fi direct technology itself. Okay. The next step is update messages, which are also called backend messages. It's like we mostly use in RIP protocol. What it actually does, it actually shares information of connected devices with other connected devices. And the fourth step is communication. The third and fourth step will take place concurrently. Okay, people in the fourth step will communicate their information. In the third step, the devices actually share their information of connected devices. And the last step is the backup. If some person want to have a backup of his communication, he can do backup on Azure database for MySQL when there is network availability. Following are the advantages. We got high data range. Wi-Fi direct sends data at 250 Mbps data rate and within range of 200 meters. Robust network, definitely we have distributed network on mobile devices. It actually is more robust. Then we have independence. There is no dependency of Wi-Fi network. Okay, you don't have to need internet to communicating with your colleagues or anything. And it's more secure. Definitely we are using network coding to increase the throughput of our network, to reduce the time delays. And security is a byproduct of network coding. By mixing of packets, we achieve that. And this is a resource requirement. Definitely, we have 3 people in our team. One is business analyst, Ms. Anaba, and I am software developer with my group partner Abdul Qayyum, who is a software tester. And a resource requirement, we need to have Wi-Fi direct technology to establish our network. Okay, there is a managed infrastructure, which Anaba already told. We are using network coding and Azure database for MySQL for backup purposes. Now let's come to target market. Our target market is corporate sector, corporations, and second is government institutions. Next. Then financial plans. So our expected sales would be like 69 lakh rupees, and we are getting revenue from sales and then maintenance and the services that we are providing like security and all. Next, our expenses. So what's the cost per software? What was that? It's 5 lakh. 5 lakh rupees per? 5 lakh to deploy. 5 lakh to deploy. Yes, in an organization. For how many users? For how many users? Like initially we are just we are just charging for deployment, and after we'll charge like transactional charges. Actually, this is the charges for 1 year. एक्चुअली सर ये 1 ईयर के हमने बनाए हुए हैं जो 5 लाख से डिप्लॉयमेंट है वो 5 लाख चार्जेस पर ईयर वो जस्ट वन इसमें नंबर ऑफ यूजर्स या डिवाइसेस वो इंडिपेंडेंट है वो जस्ट एक कॉर्पोरेट को हम लोग देंगे या फिर कोई अगर तो यानी फर्स्ट अगर मेरी कोई 25 बंदों की कंपनी है सो आई विल बी गिविंग यू 5 लाख रुपीस फॉर देयर कम्युनिकेशन सो दैट्स व्हाई यस सर अगर मेरी 25 बंदों की कंपनी है लेट्स फॉर एग्जांपल 10 बंदों की कंपनी है यस सर और मैं एक आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर अगर हूं तो आई विल बी गिविंग यू लाइक 5 lakh rupees for the communication of theirs. Corporations that are currently earning almost 1 million rupees. This software is for them initially. किसी स्टार्टअप के लिए आपका कोई feasibility plan नहीं है मतलब इनिशियल एक कंपनी है और वो चाह रही है आपका सिस्टम यूज करना तो उसके लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है We can have other packages for that. एक्चुअली जो आप कह रहे हैं वो जो 10 लोगों की अगर कंपनी हो भी तो दे कैन डेफिनेटली एक या 2 रूम्स के अंदर या 3 रूम्स के अंदर वो हो सकते हैं ठीक है तो उनके लिए इतना इशू नहीं है एक्चुअली हम लोग ये क्या करना चाह रहे हैं एक कॉर्पोरेट है जैसे सखराबी यूनिवर्सिटी इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी उसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं हमारे पास और उस केस में अगर आपको कम्युनिकेशन चैनल आपको डेफिनेटली 10 लोगों की टीम है तो वहाँ पे आईपी फोन्स हम लोग यूज़ नहीं करते आईबी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमारे पास आईपी फोन्स होते हैं जो कि
डिफरेंट बिल्डिंग में पर्सनस बैठे हुए हैं, उनके कलीग्स बैठे हुए हैं जिनको कम्युनिकेशन करने में हेल्प आउट करें। तो एक्चुअली में हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली आईबीएस सखर एक बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वो डेफिनेटली इतनी कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है। तो उस तरीके से हम लोगों ने सोच सकते हैं। नहीं, अगर कोई बंदा इतनी कॉस्ट कर रहा है तो व्हाई डोंट दे गेट सम काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम द आउटसाइड? सर एक चीज वो जो आप कह रहे हैं, वो जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है 6.5 मिलियन कॉस्ट है सर उसकी। वी टॉक टू 6.5 मिलियन किस चीज़ की? ये जो आईपी फोन्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने का, और जो क्लाउड की आजकल चीज़ें चल रही हैं, व्हाई डोंट यू थिंक लाइक कि यार मैं अगर कोई जीएसएम का कनेक्शन ले लेता हूँ जिसके ऊपर डाटा है और मैं उसके ऊपर कर लूँ, दैट विल कॉस्ट नथिंग, जस्ट लाइक 200 रुपीज़ पर मंथ, $2 पर वाईफाई मंथ। डिवाइसेस हो तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आई गेस जहाँ पे आप लोग ये पैच कर रहे हैं वहाँ पे नेटवर्क तो ऑलरेडी होगा, शाजर और नाजिर ही होगा कोई कि जहाँ पे ना हो नेटवर्क। मतलब आई डोंट बाय इट। इसमें सिर्फ आप एक कॉलिंग का फीचर दे रहे हैं और क्या क्या फीचर्स हैं? सर इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग है डेफिनेटली। ओके, डाटा शेयरिंग भी है। यस सर, उस तरीके से। तो वो चीज़ों पे आप आए ना? यस सर, वो भी है। ओके, फीचर्स बताएं इसके, क्या फीचर सेट किए हैं एप्लीकेशन? सर एक्चुअली फीचर अभी हम लोग जो अभी इनिशियल लेवल पे थे इंफॉर्मेशन शेयरिंग में थे, जिसमें आप कॉल्स भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं या डेटा शो। ओके, वो चीज़। ओके। और इसमें हम लोग सिक्योरिटी भी डेफिनेटली, सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न, उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। नेटवर्क कोडिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि थ्रूपुट को इंक्रीज करता है, ठीक है, और आपके जो नेटवर्क में जो डिलेज आते हैं उनको भी तो कोई इंक्रिप्शन वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, कोई डाटा की? एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड सर। अच्छा, कौन सा TLS वगैरह यूज़ कर रहे हैं या? नहीं सर, AES इस्तेमाल एडवांस Okay. इंक्रिप्शन। ठीक है। और कितनी आपकी प्रोडक्ट किस स्टेज पे हो? सर वी आर अप टू 70% तक हम लोग कंप्लीट है। हम लोगों ने भी यानी कि जस्ट मल्टी हॉप पे लेके जाना है, और बाकी हमारा क्या कहते हैं, 2 डिवाइसेस इजीली कम्युनिकेट कर रही हैं। हम लोग सिक्योरिटी पे डाला हुआ है, इंक्रिप्शन के थ्रू हमारे मैसेज वगैरह एक्सचेंज आउट हो रहे हैं, और बस हम लोग उसको एक MySQL का डालना है और ये जो मल्टी हॉप है उधर से फाइल्स वगैरह ट्रांसफर हो रही हैं? फाइल्स नहीं अभी में, वो जस्ट वो बाइट कोड्स हैं, जस्ट अभी हमारे मैसेजेस वगैरह जा रहे हैं, तो उसको जस्ट हम लोग स्ट्रिंग में ट्रांसफर करें, वो चेंजेस बाइट्स में करनी, और कुछ नहीं। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कौन सी हैं आपके प्रोडक्ट के अलावा? सर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे ज़ैपिया वगैरह है, इस तरह से जो डाटा शेयरिंग कर रहे होते हैं, अब उनमें इशू ये है कि वो सिर्फ सिंगल हॉप तक होते हैं कि 2 डिवाइसेस पेयर टू पेयर में हैं, वो काम कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर उनकी कम्युनिकेशन रेंज से दूर एक डिवाइस है, ठीक है, आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो हमने उस चीज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं कि मल्टी हॉप राउटिंग को भी। मल्टी हॉप राइटिंग हो गई है इसके अंदर? सर वही उसी की मैं बात कर रहा था, जस्ट उसी पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। कोई डेमो वगैरह है जो चल रहा हो आपके पास? इसमें डेमो अभी कोई है जो चल रहा हो आपके पास? दिखाएंगे कुछ? हम लोग ये सारे सेटअप करके लेके आए हुए थे, यहाँ से मैं मैसेज वगैरह सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से ये कॉल आएगी अभी मुझे? कॉल्स वगैरह उस पर मैम जस्ट अभी काम कर, मैं आपको आ रहा हूँ वो। अच्छा, अभी सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह पर है। ओके, अब जस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलें, विश यू गुड लक। थैंक यू। आप You're लोगों done के with your कोई सवाल presentation? है? जी। Okay, thank you Thank so you. much, Team Molvi. Thank you so much. सो यस व्यूअर्स, एक और टीम हमारे पास एक और प्रोजेक्ट के साथ प्रेजेंटेशन उनकी कंप्लीट हो चुकी है। जजेस ने जो एग्जामिन करना था वो हो चुका है। वो कुछ एक इवैल्यूएशन शीट है जिसमें कुछ पॉइंटर्स वगैरह बनते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स देखे जाते हैं, जो आई थिंक एक्चुअल एडवांटेजेस इस इनोवेशन से हासिल किए जा सकते हैं, उन पर बात की जाती है, उन पॉइंट्स को नोट किया जाता है। जिसके बाद ये जो शॉर्ट लिस्टेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मजीद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आगे फेज में जाने के लिए। रीजनल फाइनल्स फॉर साउथ का सिलसिला जारी है और
अभी भी बहुत सारी टीम्स यहाँ पर तैयार खड़ी हैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ, अपने प्रोजेक्ट के साथ, जो कि बस अब कुछ ही देर में यहाँ आएंगी और अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगी। तो एक काम करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक नई टीम से आपको मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ रहिए, ज़हन में रखिए कि वी आर टोटली लाइव ऑन हायर एजुकेशन टीवी। द लिंक फॉर दैट इज www.edotv.hec.gov.pk। हमारे साथ रहिए। We feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company,